Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. And I am Ruchi Sharma. Virtual digital assets or VDA extended decline this week amid growing regulatory concerns. The US Securities Exchange Commission has toughened its stance against crypto exchanges, which led leading exchange Coinbase to consider leaving US. Bitcoin dropped below $28,000 on Friday. The BTC or USD trading fair pair on the Coinbase exchange fell to $27,991 shortly before US equity markets closed. Ether, the second largest cryptocurrency by market value, recently dropped nearly a percentage point to change hands at around $1,907. बढ़ते आगे, वेब3 सिक्योरिटीज फर्म शील ने गुरुवार को कहा कि उसने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनाने के लिए प्री सीड फंडिंग में $2.1 मिलियन जुटाए, जो बिजनेसेस और कंज्यूमर्स को संभावित खतरों से सुरक्षित रखता है। कंपनी के लिए फंडिंग राउंड, जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म A16Z के क्रिप्टो स्टार्टअप स्कूल का भी सदस्य है, में क्रैकन वेंचर्स, इटर्ना कैपिटल, अल्केमी, मूनपे और क्रिप्टो सिक्योरिटी फर्म हेलबॉर्न के CEO रॉब बेहनके की भागीदारी शामिल है। Moving on, one of the hottest NFT mints in Solana's recent history is getting pushed into Friday after a groundswell of interest in the MATLADS collection broke the internet infrastructure behind it. The MATLADS collection, a project closely tied to the growing realm of Solana duo Armani Ferrante and Tristan Never, will open to public minters at 7 p.m. ET Friday, an account tied to the supercharged non-fungible token project tweeted late Thursday. Delaying nearly 24 hours could buy MATLADS creators time to solve a problem they did not think to expect: way too much internet traffic. Billions of requests routed through the crypto wallet backpack outpaced the platform's abilities, effectively resulting in a DDoS attack. Moving on, डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड डेटाबेस टेबललैंड ने क्रिप्टो फोकस इन्वेस्टमेंट फर्म कॉइन फंड के नेतृत्व में $8 मिलियन सीरीज ए फंड राउंड जुटाया है। राउंड में अन्य इन्वेस्टर्स में मल्टीकॉइन कैपिटल, ब्लू यार्ड और ए कैपिटल शामिल है। टेबललैंड की कुल फंडिंग अब $10.4 मिलियन है। ये फंड्स टेबललैंड के मेन नेट लॉन्च, नए डेवलपर टूल्स की रिलीज और इस साल के अंत में टेबललैंड स्टूडियो की डेब्यू में मदद करेगा। Moving on, in April 20, specialized cloud provider CoreWeave announced that it had secured $221 million in a Series V funding round, putting the company on track to expand operations and increase capacity in various emerging technologies. The raise was led by Magnetar Capital with contributions from NVIDIA and rounded out by Nat Friedman and Daniel Cross. In November 2021, CoreWeave secured a $50 million investment from Magnetar Capital. According to CoreWeave, the money will be used to expand its cloud infrastructure for computational workloads such as AI, machine learning, visual effects, rendering, batch processing, and pixel streaming. The firm's CEO and co-founder, Michael Infrato, said NVIDIA's support would help the company continue to scale. बढ़ते आगे, लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नाइजीरियन क्रिप्टो एक्सचेंज रोको को साउथ अफ्रीका में ऑपरेट करने के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल प्रदान किया गया है, जिससे यूजर्स क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं और देश की फियाट करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड के साथ फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं। साउथ अफ्रीकन रोको के लिए टॉप प्रायोरिटी रहा है, क्योंकि एक्सचेंज अफ्रीकन मार्केट में अपनी डोमिनेंस को एक्सपैंड करना चाहता है। कॉइन टेलीग्राफ के साथ एक प्रीवियस इंटरव्यू में कंपनी ने साउथ अफ्रीका को अपनी ग्रोथ प्लान्स के फोकल पॉइंट के रूप में स्थान दिया, जिसमें 2023 में 5 बिलियन क्लाइंट्स तक पहुंचना शामिल है। रोको ने नियर फ्यूचर में रीजनल एक्सपेंशन के लिए घाना, युगांडा, कीनिया और तंजानिया पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। Moving on, nearly 2/3 of Americans think implementing AI in the workplace will have a major impact on American workers within the next 20 years, leaving many employees wary and worried about what their future holds. An April 20 Pew Research report found 56% of 11,004 adults surveyed in the United States said AI will have a major impact on the US economy too. Another 22% believed AI will impact the economy to a minor degree. Only 13% of participants believed AI will help more than hurt American workers, whereas 32% thought the opposite. The rest of the participants predicted AI will equally help and hurt American employees 32% or were unsure 22%. Well, that's all in this bulletin. And now let's move on to our special segment, Weekly Wrap.
Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. And I am Ruchi Sharma. You are watching the weekly wrap. Virtual digital assets or VDA extended decline this week amid growing regulatory concerns. The US Securities Exchange Commission has toughened its stance against crypto exchanges, which led leading exchange Coinbase to consider leaving US. Bitcoin dropped below $28,000 briefly on Thursday before moving back to current level of $28,200. The BTC or USD trading pair on the Coinbase exchange fell to $27,991 shortly before US equity markets closed. Ether, the second largest cryptocurrency by market value, recently dropped nearly a percentage point to change hands at around $1,931. ETH fell to $1,917 at one point, its lowest perch in a week. BTC and ETH were down 7% and 3% respectively for the past 7 days. BTC's price dipped to its lowest level since April 9. Analysts have said that the Bitcoin's recent decline came after Coinbase CEO Brian Armstrong indicated that the crypto exchange giant might leave the US. Meanwhile, Coinbase was able to secure a license to operate in Bermuda. Bitcoin is expected to struggle until the regulatory clarity is not established, which means prices seem poised to drift lower. The global crypto market cap declined 1.89% to $1.19 trillion over the last 24 hours. The total crypto market volume fell 22.19% to $50.06 billion. The total volume in DeFi is currently $3.93 billion, 7.85% of the total crypto market 24-hour volume. The volume of all stablecoins is now $44.66 billion, which is 89.21% of total crypto market 24-hour volume. Bitcoin's dominance is currently 45.83%, a decrease of 0.20% over the day. The Ministry of Home Affairs is planning a conference on international crime and security in the age of NFT, AI and the Metaverse. The conference, which is expected to take place in the second week of July in the National Capital Region, will be attended by all G20 countries. According to conference organizers, this will be India's second global conference following the No Money for Terror conference. According to sources, the conference will include delegations from 20 countries, global organizations combating various types of crime, global and India tech titans, and top-level officials such as DGPs and state chief secretaries. Union Home Minister Amit Shah is likely to chair the conference on the first day. This will be the second big conference on securities and crime hosted by India. According to sources, there will be brainstorming sessions on key issues such as the links between NFT and money laundering. Many countries are concerned about the use of NFTs for money laundering and terrorist financing. Discussions will also take place at the conference about the use of artificial intelligence in detecting crime and security flaws. Armies all over the world have begun to use AI for a variety of purposes. तो विशाखा, एक बहुत बड़ी रीज़न जिसके लिए कि इंडिया में जो है क्रिप्टो करेंसीज को उतना सपोर्ट नहीं किया जाता या थोड़ा सा उससे दूर रहा जाता है, वो ये है क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, उन्होंने भी कई बार कहा है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इन तरह के जो इश्यूज हैं वो जुड़े हुए हैं। और इसी कंसर्न को जो है देखते हुए ये मीटिंग होने वाली है, कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो कि होम अफेयर्स ने कंडक्ट की, जिसे चेयर करेंगे अमित शाह। और इसमें इंटरनेशनल क्राइम्स को और सिक्योरिटीज़ को लेकर बात होगी, चर्चा होगी, उसके क्या सोल्यूशंस हैं वो देखे जाएंगे जो कि NFT, AI और मेटावर्स को लेकर है। और जैसे कि हमने कहा भी, NFTs को लेकर थोड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जो है ये टेंशन या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाली जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ी सी जो है कहीं ना कहीं टेंशन, कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, तो उसे भी एड्रेस करना ज़रूरी है। और इस कॉन्फ्रेंस में, जो कि इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है इस तरह की ग्लोबल लेवल पे, जिसमें कि G20 की सारी 20 कंट्रीज़ आएंगे, उनके बड़े बड़े डेलीगेट्स आएंगे, तो इसमें एक ये भी डिस्कशन किया जाएगा कि AI किस तरह से जो है वो हेल्प करेगा इस तरह के क्राइम्स को डिटेक्ट करने में और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ देखा जाए तो एक बात ये भी है कि जहाँ सबकी नज़रें जो है वो G20 प्रेसिडेंसी पर है या G20 मीट जो होने वाली है सितंबर में उस पर है, तो क्रिप्टो की वहाँ पे बात होने वाली है, रेगुलेशंस आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखा जाए तो जो इवॉल्विंग डिजिटल सेगमेंट्स है, जैसे कि NFTs, मेटावर्स और AI की अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है AI, तो काफ़ी ज़्यादा इस पर भी ध्यान है गवर्नमेंट का, क्योंकि अभी जो बजट आया था उसमें
फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि इंडिया में 3 AI इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे, जो एक बहुत अच्छी पहल है। तो AI रिलेटेड कोर्सेज करवाए जाएंगे बच्चों को, तो कि शुरू से ही इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उन्हें पता हो। और अब जो ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो दूसरी सबसे बड़ी, जैसा आपने कहा कि कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो इसमें AI से रिलेटेड बात होगी, मेटावर्स या NFT से जुड़े जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग जितने भी इश्यूज़ हैं, सब पे डिस्कशन किया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा मूव है। बिल्कुल। Moving on, India and the UK on Wednesday discussed international developments regarding crypto assets and emphasized the importance of robust global approaches to deal with risks attached to this. At the India-UK Second Financial Markets Dialogue, participants from both countries provided updates on recent developments in their respective banking sectors, discussing banking trends and emerging vulnerabilities and risks in the sector. Scope for augmenting knowledge on central banking digital currency through mutual learning was explored. Participants discussed international developments regarding crypto assets and the importance of robust global approaches and progress in delivering the G20 roadmap, the joint statement said. The meeting was co-chaired by Richard Knox, Director for International Financial Services at Treasury Department, and Surbhi Jain, Joint Secretary Department of Economic Affairs. तो इंडिया और यूके का जो ये मीट था, ये जो डायलॉग था, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड था, और इसमें दोनों ही कंट्रीज़ ने एक साथ डिस्कस किया कि अभी बैंकिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं या वल्नरेबिलिटीज़ क्या हो सकती है आने वाले समय में, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप रहा। और इसके साथ साथ CBDC पे भी बात की गई कि CBDC आने वाले समय में किस तरह से यूज़फुल होने वाला है। तो और अब जो ये नेक्स्ट डायलॉग है, ये इंडिया में ही 2024 में होने वाला है। बिल्कुल, बहुत कुछ इस पर डिस्कस किया गया। ये भी डिस्कस किया गया किस तरह से डेवलपमेंट्स नई जो है वो की जा रही है, बैंकिंग सेक्टर के को लेकर जो इश्यूज़ हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनको भी डिस्कस किया गया। तो ये ओवरऑल हर चीज़ जो है मैं कहूँगी पॉजिटिव ही है कि कहीं ना कहीं सोल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं साइड बाय साइड क्रिप्टो को सपोर्ट भी दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आप सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं प्रॉब्लम्स के, तो कहीं ना कहीं आप उसे सपोर्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। Lawmakers in the European Union on Thursday voted 517 as against 38 in favor of a new crypto licensing regime (MiCA) with 18 abstentions, making it the first major jurisdiction in the world to introduce a comprehensive crypto law. The European Parliament also voted 529 as against 29 in favor of a separate law known as the Transfer of Funds Regulation, which requires crypto operators to identify their customers in a bid to halt money laundering, with 14 abstentions. The vote follows a Wednesday debate in which lawmakers largely supported plans to make crypto wallet providers and exchanges seek a license to operate across the bloc and require issuers of stablecoins tied to the value of other assets to maintain sufficient reserves. The Markets in Crypto Assets Regulation was first proposed by the European Commission in 2020, and to pass into law has to be approved by the Parliament and the European Union's Council, which represents the bloc's member states. Its main provision starts to apply just over 12 months after publication in the European Union's official journal, likely in June. तो यहाँ ये एक डिबेट हुआ था, यूरोपियन यूनियन के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने डिबेट किया था कि जितने भी क्रिप्टो वॉलेट प्रोवाइडर्स हैं और जो एक्सचेंजेस हैं, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए पहले तो ऑपरेट करने के लिए, और साथ ही साथ जो भी स्टेबल कॉइन्स हैं उसके लिए एक सफिशिएंट जो है रिजर्व होना चाहिए उसे बैक करने के लिए, कि जैसे टेरा लूना का जो प्रॉब्लम हो या कुछ और कोई और स्टेबल कॉइन की प्रॉब्लम जो है इस तरह से ना हो। तो इसी डिबेट को लेते हुए फिर वोटिंग की गई, और अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी वोट्स जो हैं क्रिप्टो लॉ को लेकर भी मिले, जो कि 517 वोट्स थे, और जो ट्रांसफर ऑफ फंड्स का जो रेगुलेशन है उसको लेकर भी वोट्स जो है फेवर में रहे, 529 वोट्स जो है उसे मिले। तो अच्छा है, हम आगे देखेंगे जो रेगुलेशंस पे और इस लॉ पे काम किया जाएगा, और बहुत जल्दी जो है हम कुछ अनाउंसमेंट्स भी सुनेंगे। तो इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के ही जर्नल में जब ये पब्लिश होंगे तो ये जून में होने वाला है, और इसके 12 महीने के बाद ही जो प्रोविजन है वो मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। Moving on, cryptocurrencies may be used by the Russian central bank for international settlements. This would be yet another step in the country's efforts to regulate the cryptocurrency market. According to local media, the Russian central bank is considering using cryptocurrencies for international settlements. It's a significant step for a country that has been subjected to international sanctions since the beginning of its invasion of Ukraine. On April 18, it was revealed that the central bank was working on this concept and
and according to media reports, the bank's CEO discussed this at an event with New People Party representatives. According to the central bank's head, the use of cryptocurrencies for international settlements will be a part of larger framework experiment. Russia is still working on its cryptocurrency regulation with a few updates coming out in recent months. तो रशिया काफ़ी वक्त से काम कर रहा है अपने जो ग्लोबल रेगुलेशंस है क्रिप्टो को लेकर, तो उसी पे ये काम कर रहा है। लेकिन अब इसी बीच ये एक बोल सकते हैं कि एक टेस्ट हो रहा है या जैसा एक फ्रेमवर्क ये जो सेट कर रहा है कि इंटरनेशनल जितने भी इंटरनेशनल सेटलमेंट्स होने वाले हैं उसके लिए जो है ये क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ एक अडॉप्शन भी हम देख सकते हैं कि और मेनली ये जब यूक्रेन में इन्वेजन हुआ उसके बाद से थोड़ा क्योंकि जो रशिया है उसे थोड़ा ये बहुत सी कंट्रीज़ ने सपोर्ट नहीं किया, और जैसे कि हमने देखा था एक्चुअली इस वॉर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी काम भी आई थी, NFTs भी काम आई थी। बहुत सी कंट्रीज़ ने यूक्रेन को हेल्प किया था विद क्रिप्टो करेंसी, डोनेशंस बहुत सारी डोनेशंस भी दी थी NFTs में। और तब ऑब्वियसली रशिया को, क्योंकि उन्होंने इन्वेड किया यूक्रेन को, बहुत से लोगों ने इस बात की निंदा भी की थी एंड लोगों ने, बहुत सी कंट्रीज़ ने उनको सपोर्ट नहीं किया था। तो इन अ वे रशिया, मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं अपने टाइज थोड़े बेटर भी कर रहा है कि इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जो है वो क्रिप्टो करेंसी में वो करेगा और अपने क्रिप्टो लॉज को बेटर करना चाहता है, और हर महीने या कहीं के कुछ महीनों में कुछ ना कुछ अपडेट्स जो है वहाँ से आती रहती हैं। बिल्कुल। बट अगली खबर की तरफ, despite his recent indictment, Donald Trump isn't slowing down with his Web3 ambitions. The former US president announced Tuesday the release of a Series 2 of his NFT collection, Trump Digital Trading Cards. Trump shared the news on his social network, Truth Social, telling followers that after great success, he is expanding the collection with a second mint that's now available to collectors. While the tokens will be minted on the Polygon blockchain and remain at their original mint price of $99, the art, rarity traits, and utility features will differ from the first collection. For starters, Series 2 includes 47,000 NFTs, 2,000 more than the first series. That could be a nod to his ambition to return to the White House as the 47th president. तो ये कहा तो जा रहा है कि शायद ये सब कर रहे हैं कि वो 47th प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा ये मुश्किल है। तो पहली जो NFT कलेक्शन लेकर आए थे डोनाल्ड ट्रंप, वो बहुत सक्सेसफुल रही। उनको उम्मीद से ज़्यादा मैं कहूँगी कि इसमें सक्सेस मिला, और खुद कहा जाता है कि इन NFT से जो ट्रंप ने जितना कमाया, इनकम की थी, वो कुछ $1 मिलियन की थी। तो अब वो उसी सक्सेस को देखते हुए एक और NFT कलेक्शन लेकर आ रहे हैं जिसमें कि 47,000 NFTs होंगी, पिछली बार से 2,000 ज़्यादा, लेकिन मिंट प्राइस वही होगा $99, और कुछ रेयरिटी ट्रेड्स जो हैं वो बदल जाएंगे। लेकिन देखते हैं जो उनका एम्बिशन है, काइंड ऑफ कैंपेन कर रहे हैं अपने फैंस के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी और बढ़ाने की, तो उसमें कितने कामयाब होते हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो मानी हुई बात है कि उनकी पॉपुलैरिटी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है। तो कुछ भी उनके कुछ खिलाफ आता है या कुछ भी उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो देखा जाता है कि उनकी जो NFTs है एकदम से उसमें जो वॉल्यूम है उसका वो बढ़ जाता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब उनकी इंडाइटमेंट की खबर आई उसके बाद ही एकदम से जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया NFTs का। तो हो सकता है कि 47th प्रेसिडेंट, जैसा कि आपने कहा कि ऐसा हो भी सकता है कि उनके फैंस उन्हें हेल्प कर दें, ऐसा मुमकिन होने में। बिल्कुल। Moving on, Porsche Cars North America has announced a partnership with Microsoft to revolutionize skilling, training, and customer experiences using HoloLens 2 and Dynamics 365 guides. Prior to Hannover Messe 2023, Microsoft announced the partnership together with the arrival of Windows 11 for HoloLens 2 and new Dynamics 365 guides features. Porsche Cars North America claims that Microsoft technology is guiding its cloud transformation projects to improve the effectiveness and consistency of the business's automotive services in the US. As part of what Microsoft refers to as its strategic commitment to HoloLens 2, mixed reality and the industrial metaverse, Windows 11 will be available as a free upgrade for HoloLens 2 in the first quarter of this calendar year. तो जैसे ही अभी माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ 11 आया, उसके साथ साथ पोर्शा कार्स के साथ जो है ये पार्टनरशिप अनाउंस की गई। तो विंडोज़ 11 जो मैं बता दूं कि जो VR हेडसेट्स के लिए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के होलोलेंस 2 के लिए आने वाला है, वो जो कैलेंडर ईयर है उसके कुछ टाइम के लिए ये फ्री रहने वाला है। और इसके साथ साथ जो ये पार्टनरशिप है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पहले से ही बोलता आया है कि जो इंडस्ट्रियल
मेटावर्स है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, तो अब उसी के चलते ये जो पार्टनरशिप है इसकी अनाउंसमेंट हुई है। और ये भी देखा गया है विशाखा की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका रुझान बहुत ज़्यादा NFTs और मेटावर्स की तरफ है, इसीलिए हमने इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं, हमने इंडियन ब्रांड्स भी देखे हैं बहुत सारे, चाहे वो Hyundai हो गया, Hyundai है, मारुति है, है, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि मेटावर्स में एंटर कर रहे हैं। और अच्छा भी, बहुत सहूलियत भी है लोगों के लिए, क्योंकि आप वहाँ पे कार्स बुक कर सकते हैं, आप टेस्ट ड्राइव तक ले सकते हैं, आप कार का कौन सा कलर आपको चाहिए, क्या फीचर्स हैं, यू कैन, और एग्जीक्यूटिव से बात करनी, ये सब आप कर सकते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कन्वीनियंस लेकर आती है। बिल्कुल, घर बैठे बैठे आप सब कुछ, आप शोरूम में आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठे आप सब कुछ कर सकते हैं इसके साथ। और मारुति सुजुकी जैसे आपने बात की, तो ये पहले भी अरीना वर्स लेकर आया था, फिर नेक्सा वर्स लेकर आया, अरीना वर्स, तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत जो है यहाँ पे लोगों के लिए हो गई है। और अभी आने वाले समय में देखते हैं और क्या क्या अच्छा करने वाला है मेटावर्स। उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। बढ़ते हैं आगे। OKX, a top Web3 technology business and the second largest cryptocurrency exchange in the world by trading volume, today introduced Make Your Plan, an immersive metaverse experience that allows fans to attend a special tactical football masterclass from Manchester City captain Ilkay Gundogan. In Create Your Play, Gundogan enters the OKX collective metaverse to lead viewers through practice sessions and describe his in-game decision-making techniques. Ilkay Gundogan, a captain for Manchester City for the 2022-2023 session, is renowned for his tactical football mind and passion for coaching. Fans can take part in Web3 firsthand and access exclusive content from Manchester City players Alex Greenwood, Ilkay Gundogan, Jack Grealish and Ruben Dias through the innovative virtual environment known as the OKX Collective. तो जैसे कि हम बात ही कर रहे हैं, मेटावर्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस लेकर आया है। इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। सोचिए आप इतने बड़े कैप्टन से, मैनचेस्टर सिटी के कैप्टन से अगर आपको कोचिंग लेनी है या उनसे बहुत उनके टैक्टिक्स समझने हैं, आप मतलब पर्सनल क्लासेस तो नहीं ले पाएंगे या फिर वैसे पर्सनल सेशंस करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे ही कैन केटर टू अ बिगर ऑडियंस, बिगर फैंस, और इस तरह की नॉलेज जो आपको कैप्टन दे रहे हैं कि वो किस तरह की टैक्टिक्स यूज करते थे अपने गेम्स में, और कहते हैं ना कि ही इज नोन एज द बेस्ट डिसीजन मेकर व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड वे ऑफ नॉलेज शेयरिंग ऑल्सो। एग्जैक्टली, सो आई टोटली अग्री विद यू, क्योंकि स्पोर्ट्स, जैसे हमने ऑटोमोबाइल की बात की, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी देखा गया है कि जितनी भी स्पोर्ट्स कंपनीज़ हैं या जो प्लेयर्स हैं, अभी रिसेंटली जैसे MS धोनी को एक डिजिटल कलेक्टिबल्स दिए गए, उनके जो उनका जो विनिंग शॉट था, विनिंग 60 जी। तो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ है, कंट्रीज़, दे आर बेटिंग बिग ऑन मेटावर्स, सो इट्स क्रिएटिंग इट्स मैजिक एवरीवेयर। Moving on, for the first time, Meta has made its Horizon Worlds metaverse platform available to younger users. Until now, Horizon Worlds was only intended for adults to use. 13 to 17-year-olds in the United States and Canada, on the other hand, will be able to access the virtual world in the coming weeks, with other countries expected to follow. To make the platform safer for younger users, Meta says it has implemented a robust set of age-appropriate protections and safety defaults. These include hiding a teen's location and status, blocking them from mature game worlds, and limiting teen interactions with adult users. Meta also offers something called voice mode, which transforms the voices of people a teen doesn't know into quiet, friendly sounds and garbles the younger person's voice. तो मेटावर्स की हमने इतनी बात कर ली। अब मेटा, जिसने जब से फेसबुक से रीब्रांड किया है मेटा में, तब से बहुत ज़्यादा एक बज़वर्ड बन गया मेटावर्स। और स्टार्टिंग से जो अभी तक की मेटा की जर्नी रही, हमने शुरू में देखा कि क्योंकि मेटा ने वो मेटावर्स में जो ये रीब्रांडिंग हुई थी फेसबुक की मेटा में, तो काफ़ी ज़्यादा जो कंपनीज़ है, टेक जायंट्स है, वो भी मेटा को फॉलो करने लगे। क्योंकि सोशल मीडिया हम देखें तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी मेटा का ही है। और इसके साथ साथ फिर अब जो है मेटा होराइजन वर्ल्ड, इनका जो अपना प्लेटफॉर्म है, इसमें काफ़ी पहले देखा गया कि यूज़र्स कम थे, लेकिन अब एडल्ट्स के लिए ही सिर्फ वो ओपन था, लेकिन अब टीन्स के लिए भी ओपन हो गया है। लेकिन इसके पहले, अभी कुछ समय पहले ही US सेनेटर्स ने ये भी कहा कि जो टीन्स हैं उनको एक्सप्लॉइट होता है मेटावर्स में, तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं। तो मेटा शुड, दे अर्ज मेटा टू halt its plans to launch this for teens, लेकिन फिर भी अब मेटा की कोशिश जारी है। और फिर भी जो मार्क ज़करबर्ग हैं, वो हमेशा जितने भी लॉस हो, जो भी हो, वो ऑप्टिमिस्टिक हमेशा साउंड करते हैं और ऑप्टिमिस्टिक ही रहते हैं मेटावर्स को लेकर।
तो अब टीन्स के लिए ये एक होराइजन वर्ल्ड ओपन कर दिया है इन्होंने फाइनली, और आई थिंक टीन्स बहुत खुश भी होंगे क्योंकि गेमिंग में तो सबका इंटरेस्ट रहता ही है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि उनके लिए बिल्कुल प्राइवेसी सेफ्टी सबका पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जहाँ से भी उनकी लोकेशन कोई ट्रैक नहीं कर सकता, और काफ़ी ज़्यादा और भी अच्छी अनोनिमिटी भी रहेगी, और जो एडल्ट्स के लिए जो गेम वर्ल्ड है उसमें वो ब्लॉक रहेंगे, उसमें वो नहीं जा सकते। आई थिंक मेटा एक बहुत बड़ी जो ऑडियंस है उसको मिस आउट नहीं करना चाहता था। यंगस्टर्स जो हैं, जो टीनेजर्स हैं, या फिर 25 बिलो जो ऑडियंस है, वी नो दे आर मोस्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सोशल मीडिया, दे आर मोस्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेटावर्स एंड करेक्ट। तो वो एक बड़ा जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं मेटा आई थिंक मिस आउट कर रहा था, एंड दे ऑब्वियसली वांट टू गो आउट टू अ लार्जर ऑडियंस, वो भी कहीं ना कहीं अपना जो फाइनेंस है वो बढ़ाना चाहते हैं। देयर इज अ बिजनेस माइंड आफ्टर एवरीथिंग। तो इसीलिए आई थिंक ये डिसीजन लिया गया। लेकिन अच्छा है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही आया है ताकि सेफ्टी भी हो, सिक्योरिटी भी हो, एंड दे डोंट मिस आउट ऑन दिस large audience. Yes. Moving on, Shaquille O'Neal has finally been served papers in a lawsuit over his role in promoting FTX after lawyers accused the former basketball star of hiding from them. Alongside fellow high-profile endorsers such as Tom Brady and Larry David, O'Neal was named as a defendant in the lawsuit filed last November in a Florida federal district court. It alleges that the celebrities actively participated in FTX's offer and sale of unregistered securities. Earlier this month, lawyers at the Moskowitz law firm, which is representing investor Edwin Garrison in the class action, said they had made multiple attempts to serve O'Neal with papers in person over the past few months, but had been unsuccessful. तो लॉज तो वैसे भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो एंडोर्समेंट है उसको लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सिर्फ इंटरनेशनल नहीं, इंडिया में भी हैं, क्योंकि शुरू में हमने देखा था कि बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार, सेलिब्रिटीज़, इंडियन सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो प्रमोट कर रहे थे कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी से, एक्सचेंजेस से, तो उन पर भी बहुत बड़ी पेनल्टी भी लगाई गई है, और ये भी कहा गया कि अगर वो पाए गए कुछ प्रमोट करते हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो 3 साल तक वो एंडोर्स ही नहीं कर पाएंगे कुछ प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पे शकील ओनील पे भी जो है अब लॉसूट शुरू हो गया, क्योंकि वो कुछ FTX ऑफर्स या अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ को प्रमोट कर रहे थे, पाए गए थे, और वो उस चीज़ से हाइड भी कर रहे थे, उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। पास्ट में हम देखें तो किम कार्दाशियन के साथ भी ऐसा ही हुआ है, उन्होंने भी प्रमोट किया था एक टोकन को, और फिर एंड शी वाज आल्सो नॉट एडमिटिंग टू इट, तो बाद में उन्हें एक हेवी पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ी थी। जी, तो शकील ओनील के साथ यहाँ और सेलिब्रिटीज़ भी थे जिन्होंने FTX को थोड़ा सपोर्ट किया और उसको और ज़्यादा आगे लेके जाने में मदद की। और एक्चुअली क्या है कि जो ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ इन्फ्लुएंसर्स भी रख लिया, सेलिब्रिटीज़ भी इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, जो एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स हो या टीन्स हो, सभी लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट राइट। तो हमेशा ये देखा गया है, नॉर्मल कोई ऐड भी आती है टीवी पे तो वो प्रोडक्ट उन्हें चाहिए होता है बच्चों को, तो अगर हम FTX की बात करें तो FTX को भी बहुत ज़्यादा उन्होंने ये जो सपोर्ट किया उसके अब ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है, दे हैव टू फेस दैट। So that's all in this episode of Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV and have a great weekend.